Good morning, sir. Dubey, sir, good morning. All Hello, good morning, sir. Good morning to you. good morning, sir. Good morning, all the participants. Good morning, sir. Good morning. You ask your friends to join fast because it is already 9:45, 9:48. We are running 3 minutes late. Yes, till yesterday, I am sure that all the students have learned a lot, as Dubey sir is working hard to making things simple for you, for making your life easy and comfortable in this particular language, that is have learned so many things about talking English and as far as present and helping verb, using helping verb. But today's session is little bit changed. Now, as far as speaking is concerned, one should be very much confident enough in writing also. So today, Dubey sir is giving tips of writing and explaining the task explanation, how you will be able to write proper English in an efficient and effective manner. So I now request Dubey sir to start, kindly start the session. And I again request all the participants to ask their friends to join fast. We have already communicated in the group. The link is open. Sir is ready to start the class. For this, today's session is little bit different session. Sir, Om Prakash ji was telling me that for exercise session, there you will be giving some exercises and that will take some time, half an hour or whatever it is. 1 hour, So sir, it will, 1 hour. 1 hour, sir. So Sir. it will not be comfortable for you to wait for that exercise, and you will be comfortable in checking the exercise, whatever the students perform, whatever task you will give to them. So kindly communicate them the group in which you want to check that particular exercise, sir. Sir, So that they will send it a WhatsApp number or whatever it is. yeah. I'll do that, sir. Because all those who feel they wish to get some kind of inputs, then what I'll Sir. do is I'll go through all their work and then I'll make, I will compile cumulative points which I would like to give back to the students. Maybe on Sir. the final day, I'll do that, sir. Okay, sir. Sir. So I think in the group, social speaking English group, we have prepared in WhatsApp. So in that group, in that particular group, you want to have their exercises get Yes, sir. back. Yes, sir. Yeah, they can take a pic of Awesome. that, a clear pic of that, and they can send it Okay. to us on the group, sir. Okay, sir. Sir. Whatever you like, you just instruct to them, sir. Sure, sir. And Sure. now Because, now I request you to kindly start the session, sir. right, sir. Thanks a lot, Thank sir. you. Thanks a lot, Doctor. Thank you, sir. So, good morning, everybody. Good morning, all the participants. Well, today I'm going to talk about how to make your writing a little more impressive. So, I I have basically planned this writing session purely after giving you a brief, a few sessions on how to talk about the present. Because the kind of writing which I'm going to give you, you would realize that you would use these tenses which we have already talked about a lot in your writing. So आज मैं आपको एक छोटा सा presentation देना चाहता हूँ कि कैसे हम अपनी writing, because all of you are professionals, all of you are people who are doing professional qualification, and some of you I believe are also research scholars, some of you are doing your PhD, some of you plan to do your PhD, maybe write papers and all that. So, well, you understand in one session I won't be able to give you everything, but I'm just trying to give you some very broad, important points when you're doing the writing, and some misconceptions people have about writing. So all those things I'm trying to combine
And then, as Sir said, that we have planned 2 activities for you, like one small kind of an essay and one exercise where you have to describe something. Maybe I'm giving you a chart or a flow graph, and you have to describe that. And then you can send these write-ups to us on the group that we share, and then we'll go through these exercise. I won't be able to give you individual feedback, but I will compile various errors which I would notice and the points that I wish to convey to you, and then I'll do that. So are you all in it for this session today? Hello? Yes, sir. Okay, that's great. So I'm just giving you a small presentation, some of the points that you can keep in mind when you're doing any kind of a writing task. And subsequently, then we will do this exercise. I would request you to write these exercises in nice and neat and clean paper and take a clear pic, and then you can send it to us. Okay, so let's start now. I'm just sharing my screen, and we are starting. Okay. So can you see the screen? Can you see the presentation? Yes, sir. Definitely. Okay, great. So let us start how to make our writing effective. Effective writing basics. I'm telling you some basic points. Understand that we cannot do everything in a short session like this, but I'm trying to give you those important, pertinent points which affect your writing. So we will go slide by slide. I'll explain in between. If you have any question, you want to ask something, you're most welcome to ask me. And then I'll have a small talk on that, and then we'll do the exercise. Okay. So there are 5 keys to effective writing. Like, it is very often that you have to write something or the other. Since you're all doing professional qualifications, you may have to write your paper, you may have to write about some experiment that you do. And all these things keep happening as you grow professionally, or as you follow a profession which needs a lot of reading, learning, and sharing your ideas and thoughts. So there are 5 keys to effective writing. Let's go one by one. So I'm dividing them into 5 points. First, putting the reader first, then using simple words and short sentences, use jargons only when necessary, write with verbs and nouns, and format to improve readability. So we will learn these 5 points. We will discuss these 5 points in detail. So let us start with the first point. 5 keys to effective writing. The first point that you can make your writing effective is putting the reader first. You know, this may sound very simple, because putting the reader first. So often it happens, because I have also been writing blogs and all that. I realize that sometimes we write, and so often it happens that जब मैं लिखता हूँ और जब मैं लिख के complete करता हूँ, then जब भी मैं किसी को कुछ देता हूँ, तो I realize कि people tell me कि your language is very complex, it is not easy, and we are unable to understand it. And this is a very common problem. जब भी हम राइटिंग करते हैं तो हम जनरली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि अगर हम राइटिंग कर रहे हैं, सो हु इज द रीडर हु वी आर राइटिंग टू. एंड इफ यू कीप द रीडर फर्स्ट, then you will realize that your writing will become more impressive, and it will have the impact that you actually expect and you desire. So a common problem is sometimes in our effort to impress people, we try and use very complex language, and we put across our points in such a complex manner that maybe communication is not complete. Now understand, if I am talking in English, अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और जो भी मैं कह रहा हूँ वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे शायद फिर वो मेरी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स है, या मेरे मेरे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वेल हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ.
कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब जो मैं बोलना चाहता हूँ और जो आप जो सुन रहा है मुझे, वो जब वही चीज़ समझता है। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, आप कुछ और समझते हैं, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। फिर तो सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, बट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, हमको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमको इम्प्रेस करना चाहिए लोगों को हमारे राइटिंग से। अगेन कई बार क्या होता है, और ये मेरे साथ भी बहुत कुछ होता है, कई बार होता है, मुझे लगता है कि आई शुड यूज़ वर्ड्स और सेंटेंसेस इन सच अ मैनर कि कोई उसे पढ़े तो वो इम्प्रेस हो जाए कि अरे वाह क्या लैंग्वेज है। बट अंडरस्टैंड, मैं इम्प्रेस करने के चक्कर में कई बार कम्युनिकेशन मतलब मैं जो ऑडियंस है उससे मैं दूर हो जाता हूँ, क्योंकि everybody may not have the same level of language understanding. So it is important that you do not try and impress anybody. Your focus should be to express your ideas. And if you can keep your ideas if you express your ideas in a simple language, simple manner, you would realize that the communication is better. ओके, फिर जब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रीडर्स को, बिकॉज जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम जानते हैं कि ये किसके लिए लिख रहे हैं या हमारा ऑडियंस क्या है, तो हमको उस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए कि वो जो ऑडियंस समझेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिंस आई वाज इन द एयरफोर्स एंड आई वाज वेरी यूज्ड टू फ्लाइंग, सो हम जब भी एयरक्राफ्ट रनवे के एंड में आता है, टच डाउन के पहले, मतलब लैंड होने के पहले, तो हम उसको शॉर्ट फाइनल्स कहते थे। तो सो ऑफन आई यूज्ड टू से वो हमारे लैंग्वेज का हिस्सा था। तो कई बार मैं इधर पे यहाँ पे लोकल अपने बिजनेस ग्रुप में भी कहता था कि वी आर एट द शॉर्ट फाइनल्स। सो लोग कहते थे कि ये इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट फाइनल्स। तब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरी लैंग्वेज है, फौज वाली लैंग्वेज है, आई शुड नॉट बी यूजिंग इट। I should tell people कि नहीं, we are in the last leg of our so and so, and then that is what people understand. तो मुझे अपने रीडर के हिसाब से चूज करना चाहिए कि मुझे कौन से वर्ड्स यूज करने हैं जो मेरा जो रीडर है वो उसे समझ पाए। ओके, देन टाई इन टू द रीडर्स एक्सपीरियंस। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट रीडर का क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या एक्सपोजर है। मान लीजिए से यू आर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, यू आर ऑल गोइंग टू बी वन, एंड देन इफ यू आर टॉकिंग टू पेसेंट, किसान से अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको अपना कम्युनिकेशन जो है उसके लेवल पे आके करना पड़ेगा, जिससे कि आप जो कहना चाहते हैं वो उसे समझ पाए, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति जो भी आपके किसी राइटर को पढ़ेगा, उसका पहला सवाल ये होता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। हम कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं या ऐसे ही नहीं उसके बारे में जानते हैं, हमें हमेशा उसमें रहता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, बिकॉज हमारा हर चीज़ का एक पर्पस होता है। तो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वेन एवर यू आर राइटिंग एनीथिंग, just keep the reader in your mind and understand what kind of a reader you are addressing to, and then you should write your write up in such a manner that the reader understands you clearly. I hope I have been able to make this point clear. Hello. Yes, sir. Yeah, and you're most welcome to stop me in between. If you want to ask a question, you can do that. No, I'm open to everything. Okay, so basically, since I'm not able to see you, so I will keep asking these questions कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं. So just sort of affirmation is required so that I know that you're listening to me. ओके, सो रीडर एंड ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है रीडर वाला, ये ऐसे सुनने में बड़ा आसान लगता है बट ऐसा होता नहीं है। जनरली हम अपने हिसाब से लिखने लगते हैं चीज़ें, हमें हमेशा रीडर के हिसाब से लिखना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ माय फर्स्ट पॉइंट। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट, यूज सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। नाउ this is a very important, since I'm a language teacher, I also train students for IELTS, GRE, TOEFL and all that, and I realized that कि हम इतने कॉम्प्लेक्स, कुछ लोग इतने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करते हैं एंड डिफिकल्ट एंड अनयूजुअल वर्ड की कम्युनिकेशन ही कंप्लीट नहीं होता। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कोई चीज़ हमने कहाँ शुरू की और कहाँ एंड हो रही है। आई डोंट नो आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है राइटिंग के बारे में, बट मैंने बहुत सारे लोगों को ये लिखते ऐसे देखा है कि वो उनका पूरा एक पैराग्राफ एक सेंटेंस होता है, जिसमें वो बीच में कंजंक्शन एंड मीनवाइल एंड दिस एंड दैट, एंड दे विल पुट होल लॉट ऑफ
joining words, conjunctions, and make a very long sentence. Well, this is the first mistake. In fact, first I would sin towards यूजफुल कम्युनिकेशन. जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप कई बार उसको ठीक से क्लोज नहीं कर पाते हैं और वो सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर्स भी आ जाते हैं, या कई बार उसमें कोहेरेंस नहीं रहता है. कोहेरेंस मीन्स एक यूनिजन ऑफ थॉट नहीं रहता है, सामने वाला समझ नहीं पाता है कि आप कहना क्या चाहते हो. तो मुझे वो मूवी आ जाती है जिसमें वो बार बार ये कह रहा था कि भाई कहना क्या चाहते हो. So that is very important that you have to make. Like I would like to hear mention. You all know Mr. Dr. Shashi Tharoor. Okay, do you know who Dr. Shashi Tharoor is? Yes, sir. Very fluent. Okay. Now you know Dr. Shashi Tharoor, and he is quite famous and quite known for his abilities with the language. Okay, English language. But आप बताइए, क्या डॉक्टर शशि थरूर जब बात करते हैं इंग्लिश में, तो does he communicate to a common man or does he address to very small elite group who have that level of communication skills? क्या लगता है आपको, क्या उनका कम्युनिकेशन कॉमन मैन के लिए है? No, sir. No, sir. है ना? और कोई Most भी of the कम्युनिकेशन time आप we are unable to understand. जी अंकित, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है. इफ यू कैन कम अगेन प्लीज. Yes, sir. Most of the time we are unable to understand it. या एग्जैक्टली. तो आप मुझे बताइए, इंग्लिश तो वो भी बोल रहे हैं, इंग्लिश हम भी बोल रहे हैं, इंग्लिश वो कह रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है? ये बताइए. No, no, नहीं sir. है ना? अगर मुझे किसी चीज को पढ़ने में बार बार कुछ रेफर करना पड़े, डिक्शनरी उठाना पड़े, तो मेरा उस चीज को पढ़ने का पूरा प्लेजर या पर्पस ही डिफीट हो जाता है. फिर मुझे लगता है छोड़ो हटाओ, कहाँ पड़े हुए चक्कर में, चलो कुछ और करते हैं. डज इट हैपन और नॉट? टेल मी. Yes, sir. है ना? Yes, sir. सो It is. इसलिए आपको ना, देखिए, जब आप अगर आप कोई साइंटिफिक पेपर लिख रहे हैं, अगर आप अपना कोई प्रोफेशनल पेपर लिख रहे हैं, या कोई राइटअप लिख रहे हैं, या अपने आंसर्स ही लिख रहे हैं अपने एग्जाम में, बिलीव मी, यूज वेरी सिंपल लैंग्वेज, यूज वर्ड्स विच आर कॉमन फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमको नहीं पता कि आपके उस राइटअप को कौन पढ़ रहा है और उसका लैंग्वेज का लेवल या प्रोफिशिएंसी क्या है. सो जितना आप सिंपल रखेंगे लेकिन मैसेज क्लियर रखेंगे, उतना ही कम्युनिकेशन बेटर होगा, और बिलीव मी, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. है ना? सो कम्युनिकेशन इज ओनली कंप्लीट व्हेन द राइट मीनिंग गेट्स कन्वेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक लैंग्वेज टीचर होते हुए भी आपसे कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मत बनाइए, बिल्कुल सिंपल रखिए अपनी लैंग्वेज, एंड बिल्कुल कॉमन यूज वर्ड्स यूज कीजिए, जिससे कि जो आपका सबसे कम एबिलिटी वाला रीडर भी है उसको भी चीज़ें क्लियर हो जाएं. So that is my second important point. So I've put some examples also for you to understand. Like, look at this example. Per our conversation, I'm enclosing herewith a remittance of rupees 2,500 for the balance due on my account. देखिए, ये you would find such kind of language a lot in official documents and all that, and on official writing. सुना, देखा है आपने इस तरह के पुराने ज़माने के official documents and writings में? हाँ? For our conversation, I'm enclosing herewith a remittance of rupees 2,000. Now we can write it in this way. So here I'm using 18 words to convey a point कि भाई हमारे communication के आपसे जो भी 2,500 रुपए बचे वो मैं ये जमा कर रहा हूँ. So as we discussed, here is rupees 2,500 remaining on my account. Again, this is 11 words. But here, if you see, here is the remaining rupees 2,000 on my account. You can see here, in 8 words, I'm communicating something for what I used 18 words in the first sentence. So understand, this is just one example. I'm trying to tell you that we can keep our language as simple as possible. And you tell me what makes it more clear to understand. Which one? Could you just tell me, please? The third one. Third one makes it very clear. Communication is complete. Okay. And here I'll have to spend some time in the first one to understand कि ये बोलना क्या चाहते हैं. Okay.
एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ. I put these examples so that you understand कि how we can make things simple and our writing simple. As pertaining to the question of whether or not to construct a new storage facility. Now here we are talking about a storage facility. Okay, so like it is very common in the agricultural field to have storage facility. So as pertaining to the question of whether or not to construct a new storage facility, corporate management will ascertain the appropriateness of such an issue in the near future. Now it is such a complex thing, but if you just read the second sentence, you would realize it is such a simple message which needed to be conveyed. Like management will decide next week whether to build a new storage facility. Now, don't you think that both these sentences convey the same meaning? But the second one is far, far easier for us to understand. And I think everybody who is seeing it will be able to understand this. Okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So these are some examples which I'm trying to give so that you understand that we have this tendency of just because we know the language, we sometimes have this tendency of making things complex. I do that very often, and I'm told all the time by my team that sir thoda language simple कीजिए because मेरे साथ भी हो जाता है. And then I realize that I have to write it to the audience who I'm writing for. Okay. Then next tip is, so often it happens that we have phrases, these are called prepositional phrases, जिनका हम अपने language में use करते हैं. Okay, so sorry, like, and ये धीरे धीरे हमारे language का हिस्सा बन जाते हैं. जैसे in the amount of, so अब in the amount of को लिखने के बदले में हम simple for लिख के भी काम चला सकते हैं. In order to लिखने के बदले में हम सिर्फ to लिख सकते हैं. Due to the fact that, again, this is verbosity. Verbosity means मुझे कहना है because, लेकिन मैं उसके लिए लिख रहा हूँ due to the fact that, and मुझे आपसे ये कहना है, since I have also worked in the government, so मुझे आपसे ये कहना है कि आप कोई भी government documents उठा के देखिए, you would see a lot of such expressions are used, very common. But time is changing. Earlier we used to get limited communication, limited number of mails. हमारी जो पहले मेल आया करती थी वो सब बाय पोस्ट आती थी, फिर उनको एक स्टाफ सेग्रीगेट करता था, फिर वो मेल्स जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाया करती थी. आज मेरे मन में कुछ थॉट है, मैं तुरंत आपका ईमेल में उसको लिख के भेज दूंगा. एंड यू वोंट बिलीव, आई नो प्रोफेशनल जिनके पास रोज दिन में 300, 400, 500 मेल आती हैं. आप मानते हैं मैं जो कह रहा हूँ ये एक फैक्ट है आज के ज़माने में? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, हेलो? it sir. is. But आप sir, ये बताइए. हाँ हाँ, या तरुण? but sir, these all phrases makes the conversation more effectively No, instead of. that is what I am trying to listen to me, Taruna, what I am saying. ये सब पहले ना बड़ा अच्छा लगता था लिखने में, पता है मैंने भी ऐसे बहुत लिखे हैं लेटर्स जब मैं एयरफोर्स में था. ओके, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है कि अगर एक एग्जीक्यूटिव के पास जैसे 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 आपकी क्वालिफिकेशन ख़त्म होगी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तरुणा, और अगर आपके पास दिन में 200 मेल आ रही हैं, आप बताइए मुझे, इतना पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? Yes, sir. है ना? सो जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन आने लगी है, वैसे वैसे आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि अब किसी के पास टाइम नहीं है भूमिका को समझने के लिए. भैया पॉइंट की बात करो यार, बिल्कुल टाइम नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? मैं बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ. ओके, Yes, sir. अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि आप घुमा फिरा के बात करें. लोग क्या कहते हैं, अरे यार काम क्या है ये बताओ. आप बोलते हैं कि नहीं ऐसा? अच्छा बताइए. Right, है ना? sir. यस, सो दैट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन राइटिंग ऑल्सो. इतने सारे मेरे पास मेल है, मैं तो जस्ट मेल खोल के देखना चाहता हूँ कि टू द पॉइंट आपने क्या कहा है. अगर वो रेलेवेंट है तो मैं उसको करूँगा. अगर मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत कुछ लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको वापस डाल दूंगा कि चलो इसको बाद में देखेंगे. एंड बिलीव मी, बाद में देखने वाले मेल दोबारा कोई नहीं देखता, है ना? सो आप भी किसी को लिखेंगे, आप भी रिसीव करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट
जितना हम छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे सेंटेंसेस, लेकिन टू द पॉइंट लिखने की आदत डालेंगे, उतना आप देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन को लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसमें आपको रिस्पॉन्स और रिप्लाई जल्दी मिल रहा है। जितना आप बड़ा और एक्सप्लेनेटरी लिखेंगे, लोग आपको धीरे धीरे आपका वो पढ़ना ही बंद कर देंगे। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, यू आर राइट तरुणा, इफ यू आर राइटिंग अ if you're writing a thesis, then use these words. Okay, because thesis कौन पढ़ेगा, बहुत ही लिमिटेड उसका ऑडियंस है, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही। अग्रीड। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं छोटे छोटे, तो उसमें हमको लैंग्वेज सिंपल रखनी चाहिए। ओके, नाउ डू यू नो समथिंग कॉल्ड जार्गन? एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जार्गन। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट अ जार्गन इज? यस सर। हाँ हाँ, क्या यस, होता है अंकित? ये जो एक पर्टिकुलर किसी भी ऐसे काम से रिलेटेड, जैसे डॉक्टर है तो उसका जार्गन अलग होगा, और एग्जैक्टली। आर्मी मैन का अलग, ऐसे हर बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ शब्द होते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। है ना? तो जैसे क्या होता है कि जैसे आप लोग एग्रीकल्चरल साइंस हैं, तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते होंगे जो आपके प्रोफेशन के लोगों को एकदम समझ में आ जाते होंगे, है ना? जैसे कुछ लीगल है, कुछ लीगल जार्गन्स हैं। सो जो लीगल जार्गन्स हैं, तो जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको एकदम से समझ में आते होंगे। जैसे कि आपने कहा फौज के कुछ जार्गन्स होते हैं, तो जो फौज में है उसको समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या लगता है, जब हम लिखते हैं तो कई बार हम आदतन, मतलब आउट ऑफ हैबिट, क्योंकि हम रोज इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने रीडिंग, राइटिंग या कम्युनिकेशन में। सो स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय प्रोफेशनल ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। बट अगेन, ये एक डेफिनेशन है जार्गन की, ये डिक्शनरी से मैंने निकाली है। इसका मतलब है ऐसे एक्सप्रेशंस और वर्ड्स जो उस ग्रुप को तो समझ में आते हैं जिस ग्रुप के हैं, लेकिन डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। नाउ, एक बहुत ही कॉमन एरर आई हैव सीन इन राइटिंग, in especially in professional writing where people use a lot of jargon. जैसे ही आप बहुत सारे जार्गन्स यूज़ करते हैं, आप अपने ऑडियंस को बहुत लिमिट कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आप चाहते हैं कि आपका जो ऑडियंस है, जो आपके स्पेशल कोर ग्रुप का ऑडियंस है, बस वही पढ़ के समझ सकता है, बाहर वाले को उसको समझ में नहीं आएगा। सो हमको अपनी राइटिंग में इन जार्गन्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। सो सिंस आई वॉज इन द एयरफोर्स, तो मैंने वहाँ से कुछ सेंटेंसेस निकाले हैं जस्ट टू टेल यू कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। Like the new FMIS system from Global provides VOR, DME, NAV redundancy as well as enhanced GPS capability. Okay, अब अगर मैं इधर पे फ्लाइट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लिख देता हूँ, तो आपको नहीं समझ में आ जाएगा वेरी क्लियरली कि आई एम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ ए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इजंट इट? Yes, है ना? यस इसी सर। तरह if I say VOR and DME, so well, all those who are into flying, they would understand it. But then, do I want my write-up only to be read by those who are already into this, or I want to have a larger audience? So if I want to have a larger audience, for their communication, I have written it for you कि आप लोग भी समझें। तो मैं VOR के बदले में लिखूंगा VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज, एंड DMA के लिए लिखूंगा डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। सो जैसे ही मैं ये जार्गन्स हटा के और ये इस तरह के जो एब्रीविएशन से हटा के मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा, भले ही ब्रैकेट में मैं फिर FMIS लिख दूं या VOR/DME लिख दूं, my communication is enhanced, my understanding is enhanced. Okay, एंड ये जार्गन्स जो है ना, ये अपने आप हमारी लैंग्वेज में घुस जाते हैं, क्योंकि हम रात दिन वही करते हैं, तो हमको लगता है ये तो सबको पता है, ये तो सबको मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट when you are doing a formal writing, my advice to you is to first time when you mention anything, first time, especially in your writing, then write the full form, and then subsequently, and in bracket, you can put the jargon or the short form, and then subsequently in your writing, you can use the short form. Why? Because you have given the meaning or given the full form in the first time you mentioned it. This will improve your writing by a big margin.
So here you can say global new flight management system provides several ways to navigate your plane, including the latest in satellite navigation. So ये और ये sentence वही चीज communicate कर रहे हैं. So here देखिए even a non-flyer, somebody who doesn't understand flying in the system of flying, maybe like some of you are, you would understand कि global new flight management system जो है ये provide several ways to navigate your airplane. मतलब अलग अलग तरीके बताता है जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, including the latest in satellite navigation. और satellite navigation हम लोग को भी पता है GPS क्या होता है ना? So देखिए ये now you tell me, I'm asking you, which one you find easier to understand, the first one or the second one? The second one. The second one. So always understand, if you want a limited audience, if you want limited number of people to read your write-up, then use jargons. But if you want a wider audience, which I think everybody should aim at, then you should have your language simple, minus all the jargons and complex vocabulary of your particular field, and use common terms as far as possible. जहाँ avoid नहीं हो सकता है वहाँ तो नहीं कर पाएंगे. Okay, एक और example देता. Again, you have to tell me which sounds better. While the new ST7000 provides extensive memory and is extremely user compatible, it lacks the requisite capacity for calculating at a high rate of speed. Now, I don't know if what you make out of it, but this example I have taken out from a technical writing, and now I have simplified it with my understanding. Our computer system is easy to use and has enough memory, but it is somewhat slow. Okay, while the new system provides extensive memory and is extremely user compatible. यही चीज मैंने कहा, our system is easy to use and has enough memory. Okay, it lacks the requisite capacity for calculating a high rate of speed. Arey bhai, that means it is slow. Are you getting it? Yes, sir. So these are some examples I'm trying to give you, that how people have this tendency because they feel that if I'm not writing like this, maybe I'm not making the right impression. But believe me, audience is important. And again, I'm reiterating one point, and that is, आप बताइए सुबह से लेके शाम तक आप कितनी चीजें पढ़ते हैं? Constantly आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? Yes, Yes or sir. no? है ना? Yes, पहले yes, हम sir. रीडिंग करते थे, आज हम रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रीडिंग है ना वो कंसोलिडेटेड रीडिंग नहीं है. हम दिन में कम से कम 50 व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हैं. Am I right? Yes. Yes, sir. Plus Maybe WhatsApp more. message, maybe more, but I'm just saying a ballpark figure of 50 messages. And 50 messages में मान लीजिए एवरेज अगर 20 वर्ड्स हैं, तो आप खुद देख लीजिए कि आप कितने बड़े बड़े राइटअप्स रोज दिन में पढ़ रहे हैं. लेकिन ये 50 के 50 मैसेजेस एब्सोल्युटली यूजलेस हैं. इसमें कुछ आपके काम का नहीं होता है ज़्यादा, है ना? है ना? Yes. So, क्या हो गया है कि हम वी आर बॉम्बार्डेड विथ इंफॉर्मेशन. So it is now important for us to understand that if I want communication, I should make things simpler. I'm repeating it again and again. Make it simpler for people to understand. Nobody has time. Nobody has time to read such big things. हमको आजकल पेश, अब मैं तो गारंटी देता हूँ, आप लोग भी कंफर्म करेंगे, कोई बहुत लंबा व्हाट्सएप मैसेज रहता है तो आप लोग नहीं पढ़ते, छोड़ते. कौन पढ़ेगा इतना लंबा? Yes or no? Yes, sir. We do this. है ना? We do this. So this is a common thing. ये ना with technology and with changing dynamics in the society, ये change is coming. So I thought I should convey to you. One more example. Now again you see, demand side capacity combined with existing contracts and local generation resources that is put on proposal as a whole will be able to meet local demand and spinning reserve requirements for the next 5 years. Hell of a lot of complex sentence. But I can simply say the proposed system will be able to save and produce enough power to meet local needs for the next 5 years. Now, you can match these two sentences. You will find the exact information is here in the second one, but here this is conveyed
in a much more complex manner. So I hope this point is conveyed to you, friends. Yes. Okay. Then write with verbs and nouns. Now, I don't know whatever I have taught you in all these 3-4 days, and I've given you certain inputs on tenses. बट आपने रियलाइज किया है कि ये सारे चीजें जो मैंने आपको बताई ये सब एक्टिव वॉइस है. और इंग्लिश में ना हर टेंस का एक पैरेलल पैसिव वॉइस भी है, जो मुझे लगता है कि आप सबको आना चाहिए, बिकॉज बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इस छोटे से सेशन में तो पॉसिबल ही नहीं है. और आपने सुना होगा, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, Yes, sir. है ना? डू यू यूज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस? ओके, you would notice it, I'm telling you. देखो इंग्लिश में ना 2 तरह के वॉइसेस चलते हैं, एक हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक कहलाता है पैसिव वॉइस. एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. आपने सुना होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, है ना? हैव यू हर्ड ऑफ दीज 2 थिंग्स, एक्टिव, Yes, पैसिव एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? Now, you नहीं, have to sir. learn this. You have to learn this if you are planning to write papers, and if you're planning to, do research and thesis and dissertation and, research analysis, whatever. You need to learn actually active and passive voice, difference between active and passive voice, and direct speech and indirect speech. ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, and I think if you want to make your writing impactful. सो इंग्लिश में हम 2 तरह के वॉइस यूज़ करते हैं. एक होता है एक्टिव वॉइस, जहाँ पे हम जो बोलने वाला व्यक्ति है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है किसी से. और एक होता है पैसिव वॉइस, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन किसने दिया है या कौन दे रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव का. The teacher told us to do the homework. The teacher told us to do the homework. This is an active voice sentence. इसमें टीचर ने हमको होमवर्क करने के लिए कहा. तो यहाँ पे किसने कहा इज मोर प्रोमिनेंट, कि टीचर ने हमको होमवर्क करने के लिए कहा. लेकिन कई बार हम आपस में बात करते हैं कि नहीं नहीं हमें तो होमवर्क करने के लिए कहा गया है भाई, हमें तो कंप्लीट करना है. देन हम कई बार कहते हैं वी वर टोल्ड टू डू द होमवर्क. We were told to do the homework. यहाँ पे हमें बताया गया है होमवर्क करने के लिए, लेकिन किसने बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है. सो ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. हमको जब हम राइटिंग करते हैं, तो अगर आपका राइटिंग बहुत फॉर्मल है तो आप नोटिस करेंगे कि आपको वहाँ पे पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. बहुत ही फॉर्मल वो है. या अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में लिख रहे हैं कि ऐसा किया गया तो ऐसा रिजल्ट पाया गया, आपने सुना होगा इस तरह के सेंटेंसेस, ये करने पे ये पाया गया. सो यू विल सी दैट यू हैव टू यूज पैसिव वॉइस. सो इंग्लिश हम जब अपना कुछ भी लिखें तो हमको एक बैलेंस बना के चलना होता है कि हम कहाँ पे एक्टिव यूज करें, कहाँ पे पैसिव. और ये आपको सीखना होगा. जैसे अगर मैं किसी एक क्लाइंट को या किसी अपने कस्टमर को लिख रहा हूँ तो मैं कहूँगा द कंपनी सेल्स इंश्योरेंस. इट इज़ मोर डायरेक्ट, मोर एड्रेसिंग, एंड इट इज़ बेटर इन कम्युनिकेशन. बट इसी को अगर मैं पैसिव में लिखूंगा तो ये शायद उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा. इंश्योरेंस इज सोल्ड बाय द कंपनी. ये बड़ा पैसिव हो जाता है, इसमें मतलब कनेक्ट नहीं बनता है. सिमिलरली द कंस्ट्रक्शन क्रू रिपेयर द रोड, है ना? तो कंस्ट्रक्शन क्रू ने रिपेयर किया रोड, मोर डायरेक्ट, बट द रोड वाज रिपेयर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी. और यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं नहीं रोड ठीक करी गई. सो ये यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज एक्टिव वॉइस, दिस इज पैसिव, दिस इज एक्टिव, दिस इज पैसिव. एंड लेकिन जब मुझे कहना है कि मैं किसी टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, टेस्ट शोड द न्यू मटेरियल डिड नॉट वेयर वेल. तो टेस्ट ने बताया कि जो न्यू मटेरियल है वो ठीक से घिसा नहीं. ओके,
ना अब यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस यूज करने से उसका इम्पैक्ट नहीं आता. व्हेन टेस्ट वर रन इट वाज डिस्कवर्ड दैट गुड वेयर इज नॉट exhibited by the new material. So here text shows the new material did not wear well. Okay, so these are some of the examples I'm giving you where you have to make a balance between active and passive voice, and you should learn about these two voices in English. Okay, और जैसे Mr. Sharma ran quickly across the 4-lane street, almost falling down when he stopped in a large hole in the concrete. Now again, I am trying to convey not using the right word, not using the right noun. But मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, Mr. Sharma ran quickly across, I can say sprinted across the pathway, 4-lane street, array, it's a pathway, stumbling, almost falling down, I can say stumbling when he stepped into a pothole. So stepped into a large hole in the concrete. ना कह के मैंने सिर्फ क्या कह दिया, potholes. अब यहाँ पे आता है आपकी vocabulary. English is a very rich language. And if you remember, did you people attend my first session? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I very emphatically said that day कि हमको अपनी vocabulary को improve करना चाहिए. अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि हमको अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहिए और कम से कम 1 या 2 नए शब्द रोज अपनी भाषा में जोड़ने चाहिए. जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और वाइड होगी, आप रियलाइज़ करेंगे कि कई बार हमको बहुत सारा कहने के बदले में सिर्फ एक वर्ड अगर हम लिख दें तो मीनिंग कन्वे हो जाएगा. एंड दैट विल इम्प्रूव एंड एनहांस योर राइटिंग इन अ बिग मार्जिन. Okay, so vocabulary is important and choosing the right verb is important, and this will happen only when you work systematically towards improving your vocabulary and word count. So this is important. Now हमेशा मैंने देखा है, बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से फॉर्मेट नहीं करते. या तो हम सही फॉन्ट यूज़ नहीं करते हैं, हम उनको सही बुलेट पॉइंट्स में नहीं डालते हैं, हम उनको लिस्ट में नहीं डालते हैं, हम उसको जहाँ बोल्ड करना चाहिए वहाँ बोल्ड नहीं करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. मैं जस्ट आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि इन द एयरफोर्स anybody, if you have had the background of knowing somebody in the forces, you ask them, everything is very clearly laid out कि अगर आपको एक लेटर लिखना है तो उसमें एड्रेस कहाँ होगा, उसके बाद कितने स्पेस छोड़ने हैं, उसके बाद सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के बाद कितने स्पेस छोड़ना है, फिर लेफ्ट इंडेंटिंग क्या है, राइट इंडेंटिंग क्या है. और अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो हो सकता है कि आपका बॉस उस लेटर को साइन करने से मना करते हैं. इसको फौज में कहते हैं MSD, माइनर सर्विस ड्यूटी. It is called minor service duty. It is a service duty to format your letters in the right manner. And as I said, 1 space, 2 space, and 3 space, everything is very important there. So anything changes, and maybe your seniors will reject that and ask you to come and correct it. And we used to penalize when we were in the academy. We were penalized for not following the MSD, and marks were cut in our exams and assessments. So formatting is that important. You take up any official document, you will see that it is very well formatted. So you should also, when you're doing your writing, be very careful of your formatting, the kind of font that you're using, if you're writing it on a computer, or bulleting, giving spaces, indenting, and all these things, headings, subheadings, and all that. I hope this is a very simple thing. People feel कि इसमें क्या है, but this makes a huge impact and huge difference in your overall quality of overall impression of your writing. Okay, is it okay? Should I continue? Yes, of course, sir. Okay. Now, 3 things that you should do before writing. It is called planning,
organizing, and then writing. There are 3 steps of any writing that you do. Okay, so planning is the key. In fact, a lot of students come to learn IELTS and prepare for IELTS, and if they are preparing for GRE, I tell them that before you start writing, you should know exactly how your document should look or how it would look. So who is your audience? Who are you writing to? और who are you writing for? So आपका audience कौन है? ये एक सवाल कीजिए अपने आप से and points लेके. Then the purpose of writing. आपका purpose क्या है? आप क्या convey करना चाहते हैं? किसी को आप कोई process समझाना चाहते हैं या किसी को आपके experiments के results बताना चाहते हैं, तो आपका purpose clear होना चाहिए so that जब आपकी writing complete हो तो आपको ये clearly लगे कि हाँ, this was my purpose and I've been able to communicate this purpose very clearly to the audience. And ये reader जो है, ये इस information को कैसे use करेगा? Is it user friendly? Because I believe you're all scientists, you would come out with solutions, you will come out with methods of helping people, you know, for whatever is your audience group. So आपको ये देखना चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं वो लोग उसको समझ के उसको यूज कर पा रहे हैं क्या इस इंफॉर्मेशन को. सो ये 2-3 कॉमन क्वेश्चंस है यू शुड आस्क. You should write these questions down before you start to plan your writing. Okay. Then as you begin, you should assemble all the useful information. So पहले तो सारी useful information को assemble कर लो. फिर हमेशा कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. मैं अगर आपसे पूछूं कि tell me the advantages and disadvantages of owning a car. Maybe there is a activity connected to that which I'm planning to give you. So what are the advantages and disadvantages of owning a car? So well, मुझे लगता है कि हम लोग सब इतने इंटेलिजेंट है कि हमको 5-7 पॉइंट्स मिल जाएंगे कि क्या एडवांटेजेस है कार के होने के. 5-7 पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे कि कार के क्या नुकसान है एनवायरनमेंट में, साउंड पोल्यूशन एंड दिस एंड दैट. अब इतने सारे पॉइंट्स क्या आप लिख सकते हैं एक छोटे से राइटअप में? हेलो, आई एम आस्किंग यू पीपल. No, sir. No, हाँ, तो फिर हमको फिर ये डिटरमिन करना पड़ता है कि मेरे पास जो 6 पॉइंट्स हैं फेवर में, 5 पॉइंट्स हैं अगेंस्ट, और मुझे लिखना है सिर्फ 250 वर्ड. तो क्या इतने सारे पॉइंट्स मैं 250 वर्ड्स में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता. तो फिर मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है जिसको मुझे लिखना ही चाहिए, और कौन सा है जो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं तो उसको हायरार्की में डालना चाहिए. फिर हमको डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, ये 2 पॉइंट्स तो आने ही चाहिए और ये एक अगेंस्ट का एक पॉइंट तो मुझे मेंशन करना चाहिए. बाकी देन देयर इज नॉट इनफ स्पेस फॉर मी टू राइट फर्दर. ओके, दैट इज हाउ यू शुड डिटरमिन व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड देन प्रायोरिटाइज इट. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अगर ये प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं तो हम कुछ लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा लिख देते हैं, और जब हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लिखना होता है उसके लिए हमारे पास या तो टाइम नहीं रहता है, या वर्ड काउंट ऊपर हो जाते हैं, या उससे ज़्यादा बड़ा हमारा जो रिसर्च आर्टिकल है वो एक्सेप्ट नहीं होगा. तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है, और जो जिसे छूट सकते हैं उसे छोड़ दीजिए, है ना. चूज व्हाट टू लीव आउट. ओके, देन हमें 4 वे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए. पहले तो डिवीजन करना चाहिए, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए, कॉज इफेक्ट से करना चाहिए, या प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्यूशन. प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्यूशन. लेट्स सी, डिवीजन क्या होता है. स्टार्ट विद द मेन आइडिया देन डिस्कस द पार्ट्स. सो जब भी आप कुछ किसी चीज़ को बता रहे हैं तो हमेशा पहले मेन आइडिया से शुरू कीजिए, फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स बताइए. जैसे द कॉरपोरेशन फेसेस 4 प्रॉब्लम्स दैट थ्रेटन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस. तो कॉरपोरेशन को ना 4 समस्याएं जो उसके कॉम्पिटिटिवनेस को थ्रेटन कर रहा है, जैसे आउटडेटेड मार्केटिंग प्लान, पुअर सर्विस record, high prices and low morale of the workforce. Now you can go and further. So this line conveys what is going to follow. Okay, so this is my main idea and these are the parts which affect the main idea. Okay, then you should put compare and contrast, put the conclusion up front. Okay, हमेशा ना
लोगों को ये मत तरसाइए मत कि एंड में उनको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप बताइए कि मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर उसको सब्सटैंशिएट कीजिए अपने आर्ग्यूमेंट से। देन लोगों को पता है कि ओके दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग अबाउट और रीडिंग फॉर। So like if we expand in the West, we will face the same challenges as we did in expanding in the South. तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस। हमको अगर इसमें एक्सपेंशन करना है कंपनी को तो हमको फेस करेंगे, जैसे लैक ऑफ आइडेंटिटी, प्योर डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट टर्म कैश फ्लो प्रॉब्लम और अनट्रेन्ड लेबर फोर्स। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, पुटिंग योर कंक्लूजन अप फ्रंट so that people know exactly what they are reading. They should not feel disappointed in the end, because that will impact your rating as a writer as such. Okay, find a straightforward way to offer recommendations. Okay, straightforward ways for recommendation, like the shipping based inability to ship products fast enough results from an insufficient tracking system. तो इसकी एबिलिटी जो है, मतलब हम क्यों नहीं हो पा रहा है ट्रैकिंग सिस्टम, उसका प्रॉब्लम ये है। और सोल्यूशन ये है, इन्वेस्ट करो नए कंप्यूटर में, ट्रेन करो स्टाफ को, इन्फॉर्म कस्टमर्स ऑफ रियलिस्टिक शिपिंग टाइम्स एंड बजट फॉर ओवर टाइम। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी कैन बी वेरी डायरेक्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड यहाँ पे आप सब जगह देख सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट मैसेज इज गेटिंग क्लियर। Hello, is my audience there? Or I have lost my audience. Yes, Yes, sir. yeah, Sure, na? Okay. sir. I hope I am not making it a little too Yes, sir. boring. And are you okay with No, this? sir, it's fine. Okay. Thank you. Thanks a lot. And cause and effect. ओके, कॉज एंड इफेक्ट। तो जब भी आप ना किसी भी चीज़ को अगर कुछ कॉम्प्लेक्स राइटिंग कर रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग, देन यू वुड इनवेरिएबली यू आर टॉकिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। यू आर साइंटिस्ट, सो यू आर constantly dealing with cause and effect. Okay, so present a clear way analysis, like A to B, A B C D, A B C D in favor, E against, like रीऑर्गेनाइजिंग द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल कॉज 2 बेनिफिट्स एंड 1 प्रॉब्लम। सीधे पहले लिख दिया आपने, 2 बेनिफिट्स होंगे और 1 प्रॉब्लम होगा, जैसे इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी, बेटर कम्युनिकेशन, और प्रॉब्लम होगा पूरा सर्विस टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट जितना आप इस तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, उतना आप रियलाइज करेंगे कि जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, एंड व्हेन यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज, then you will find that people will just understand whatever you're trying to convey. Rather than beating around the bush, we say, you can be very direct, and you can see that the impact is far, far larger and far impactful. Okay. So plan, organize, write. सबसे पहले कुछ भी लिखने के पहले एक आउटलाइन बना लेना चाहिए। हमेशा पॉइंटर्स में लिखने की आदत डालिए कि फर्स्ट अगर इंट्रोडक्शन होगा तो उसमें मैं ये लिखूंगा, फिर मेरा फर्स्ट पैराग्राफ। यू शुड प्लान वॉट एवर यूर राइटिंग, इवन पैराग्राफ वाइज, टू दैट लेवल। बिलीव मी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ लिखना शुरू करते हैं तो टॉपिक देखते हैं और फिर पेन उठा के सीधे सीधे लिखना शुरू करते हैं, फिर बीच में रुकते हैं, फिर सोचते हैं क्या लिखना चाहिए, फिर थोड़ा सा लिखते हैं, फिर बीच में रुकते हैं क्या लिखना चाहिए, फिर थोड़ा लिखते हैं। Am I right? This is how generally we do our writing or not? Yes. Yes, sir. But now I am telling you that पहले 5 मिनट 7 मिनट डिपेंड्स कि आपका किस तरह का लेवल का है। अगर कोई रिसर्च पेपर है तो मे बी 1 हफ्ता लिखो मत। लिखना is the last part, remember, because putting your ideas in words will not take much time. Getting the ideas organized, putting them in outline, knowing exactly where to write, and what to give priority, what is not important, what is more important, what should be mentioned, what should not be mentioned. All this planning, if it is done, believe me, उसको words में convert करने में ना आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा। हमारा पूरा फोकस हो जाता है कि क्या लिखें, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस क्या है। बट अगर आप प्लान कर लेंगे, यू विल फाइंड ऑल योर राइटिंग विल बिकम वेरी इजी। सो डिवेलप एन आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईजिएस्ट पास्ट को पहले लिखिए, डिवेलप मेजर सेक्शंस, introduction for main ideas and main points in first paragraph. Okay, this is just, I'm just writing
I'm just ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया है आपको, ये मिक्स राइटिंग के लिए है. कुछ चीज़ें कहीं फिट होंगी, कुछ कहीं और फिट होंगी. प्लीज़ यू अंडरस्टैंड, मैं हर एक स्पेसिफिक राइटिंग के लिए अभी आपको नहीं दे पाऊंगा, है ना. वी वुड नीड मच मोर टू डू दैट. Okay, and understand 90% of writing is rewriting and editing. है ना. 90% of writing is rewriting and editing. हमको कई बार लगता है ना कि देखो इसने कितना अच्छा लिखा है, अरे such a nice person, such a nice way of writing, he or she knows so much or she can write. Believe me, that person has also done a lot of rewriting and editing. Everything, this is needed. And let the document cool. This is a nice term, you know that. कुछ लिखने के बाद ना उसको थोड़ी देर शांत हो जाइए, उसको कूल होने दीजिए, और फिर बाद में रिविजिट करेंगे. और उसको कहते हैं रनिंग ए फॉक टेस्ट. फॉक टेस्ट मतलब पढ़ने के बाद कितना समझ में आया, या किसी और को पढ़ाओ, वो पूछो कितना समझ में आया, कोर आइडिया क्या है, कोर पॉइंट क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. लाइक हाउ फॉगी माई राइटिंग इज इट क्लियर, ल्यूसिड, एब्सोल्युटली क्रिस्टल, और एम आई मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स. तो दैट्स अ फॉग टेस्ट. एंड देन हम हमेशा रीड्राफ्ट करें. एंड यूल, मैं आपको जस्ट आई जस्ट वांट टू गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज इन द एयरफोर्स. सो आई हैड अ बॉस who was very good at language. So I remember once we had to send one letter to the command headquarters, and he asked me to draft it. So I drafted that letter and sent him for correction, and correction means approval. That is called draft for approval, DFA. एंड देन आई फाउंड कि उन्होंने खूब सारे उसमें मार्क्स कर दिए अपने रेडिंग से कि इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, ये यहाँ करो, वो कर. मैंने उसको फिर से करके भेज दिया. अब मैंने कहा कि चूंकि मैंने उनके जितने पॉइंट्स थे वो तो इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं, अब ये अप्रूव हो जाएगा और मुझे भेजना था. मैंने देखा कि वो फिर मेरे पास वापस आ गया, उसमें फिर खूब सारे गोल गोल रेड मार्क्स हो गए कि इसको चेंज करो. मैंने कहा अरे ये तो अब उन्हीं का ड्राफ्ट था. मैं उसको फिर चेंज किया. थर्ड टाइम व्हेन आई सेंट, आई फाउंड दैट ही वाज स्टिल डूइंग द सेम थिंग. देन आई रोट दैट लेटर, माय सेकंड ड्राफ्ट जो उन्होंने पहली बार करेक्ट करके दिया था, वो लिख के मैंने अपने ऑन बिहाफ ऑफ माय कमांडर मैंने साइन करके कमांड को भेज दिया. और फिर मैं उनके साथ ये खेलता रहा. वो ड्राफ्ट कम से कम 10 बार रीड्राफ्ट हुआ. बाद में उन्होंने कहा कि अरे यार वो लेटर भेजना था, बहुत देर हो गई, तुमने भेजा नहीं प्रशांत, हम लोग तो इसी में लगे हुए हैं. मैंने कहा सर नहीं, वो तो मैंने भेज दिया था, आपका सेकेंड ड्राफ्ट ही मैंने भेज दिया था. ओके. सो समटाइम्स हमको ना ये आदत हो जाती है बार बार बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की, एंड देन वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. ओके. So, well, friends, I think I have taken exactly 1 hour of yours to convey how to make your writing effective. Okay. So, if you have any doubts, any questions, anything that you wish to ask me, you're most welcome to do so. Yeah. Hello. Yeah, please tell. Hello, is somebody asking anything? Yes, sir. Actually, I didn't get your voice at that time. What is fog test you were talking about, sir? See, fog is what? When there is Run a fog test. can you see things clearly? You know, actually ये अलग अलग टर्म में डिफरेंट, इट्स अ साइंटिफिक टेक्निकल टर्म. बट अगर मान लीजिए बहुत धुंध है, बहुत फॉग है, तो क्या आपके विजन में क्लैरिटी होगा क्या? फॉग मतलब धुंध, है ना. ओके. हेलो अंकित, इज दैट यू हु आस्क्ड दैट? हाँ. So it's a fog test. It's just a jargon. I've used a jargon, just to see that किसी और से अगर एक बार पढ़वा के देखो, अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से, और उनसे पूछो कि ये कैसा है. इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? Okay. Is it clear? The ideas are clear or ideas are confusing? And that is something called a fog test. Okay. Like I had a boss who used to write articles for Flight Safety magazine. So he used to, at times, since he knew that my language was good, so he very often used to call me to his office and say,
ये आर्टिकल मैंने लिखा है, बैठ के पढ़ और बता फिर इसमें क्या करना है, ये आइडिया क्लियर हो रहा है कि नहीं। एंड देन आई यूज्ड टू से कि सर यहाँ तो ठीक है, यहाँ आपका लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, सर ये आइडिया थोड़ा कन्वे नहीं हो रहा है। देन यूज्ड टू से ओके ओके लेट्स इनकॉर्पोरेट दैट। सो इट्स लाइक टेकिंग अ पीयर ग्रुप इनपुट्स ऑल्सो टू सी दैट जो आप कहना चाहते थे वही चीज कन्वे हो रही है या नहीं हो रही। ओके Okay, sir. Okay. Thank you, sir. ओके, एनीबडी एल्स? Yes, Yes, sir, sir. I have some points to ask. या जागृति? Yes, sir, in sir, in today's writing, our article, research paper, they also go through scrutiny, like plagiarism is a problem. Yes, So yes. to overcome, sometimes we, write the वो क्या कहते हैं, पर्यायवाची का प्रयोग करना, सिनोनिम्स ताकि उससे हम बच सके। क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सिर्फ सिमिलैरिटी चेक करके दे देते हैं और वो परसेंटेज ऊपर चला जाता है हमारे राइटअप का। एग्जैक्टली। तो ऐसे में अगर सिनोनिम्स का प्रयोग कर लेते हैं, मतलब बहुत कॉमन से थोड़ा सा कम कॉमन या फिर और अनकॉमन, तो उस मतलब एटलीस्ट वो आगे प्रोसेस में बढ़ जाता है हमारा रिसर्च पेपर ऐसे में। तो ये फिर वही बात हो जाती है कि साउंड करेगा ऑकवर्ड या फिर रीडर्स के लिए थोड़ा सा मैं जागृति, आपको बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिस इज अमेजिंग पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट अप। देखिए हम सब जानते हैं, देखिए लेट अस बी फ्रैंक, हम लोग बहुत सारे आइडियाज तो यहाँ वहाँ से बोरो करते हैं, है ना? ये वी आर ऑल इन कॉलेज एंड ऑल दैट, और वी आर स्टडिंग, तो हम कई बार यहाँ से बोरो कर लेते हैं, वहाँ से बोरो करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक समस्या हो गई है। पहले के ज़माने में तो लोगों की पीएचडी दूसरे की पीएचडी कॉपी करके हो जाती थी, बिकॉज देयर वाज नो सच सॉफ्टवेयर विच विल चेक द प्लेजरिज्म, है ना? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या समस्या हो गई है, जैसे ही आप कहीं से लिखते हैं, जैसे ही आप उसको प्लेजरिज्म चेकर में डालते हैं, इतने सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, है ना? हाँ। सो मेरा ये कहना है, इसीलिए ज़रूरी हो गया है दो चीज़ें। अब जो ये अच्छा, साथ में आजकल प्लेजरिज्म चेकर्स के साथ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो आपको रीवर्ड करके दे देते हैं। आर्टिकल रीराइटर्स होते हैं जो आपको आर्टिकल को रीराइट करके देते हैं, है ना? या फिर कई बार हमको लगता है कि चलो अच्छा ये वर्ड हटा देते हैं, इसके बदले में एक सिनोनिम डाल देते हैं या समानार्थी वर्ड डाल देते हैं, तो हो जाएगा। लेकिन बिलीव मी, आप कितना भी करते हो ना, प्लेजरिज्म चेकर के भी अलग अलग लेवल हैं। और आजकल यूनिवर्सिटीज इतनी पर्टिकुलर हैं, स्पेशली फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल पुट योर डॉक्यूमेंट्स थरली टू प्लेजरिज्म चेकर्स एंड सी कि अगर आपने कुछ आइडिया यहाँ वहाँ से नहीं लिया है ना? तो बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से ये होता है, रीफ्रेमिंग द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड। नो हार्म बोरोइंग द आइडिया, है ना? लेकिन सिर्फ अगर आप सिनोनिम्स चेंज करके कई बार हम रीराइट करते हैं ना, तो हो सकता है उस प्लेजरिज्म चेकर में तो आ गया कि ये ठीक हो गया है, लेकिन अगर उसके ज़्यादा एडवांस एल्गोरिथम वाले प्लेजरिज्म चेकर्स होंगे ना, वो बता देंगे कि आइडिया तो यहाँ से बोरोड है। ओके, सो बेस्ट आइडिया ये होता है, बिकॉज ऐसा नहीं है, कई बार मैं भी आइडियाज़ लेता हूँ, तो मैं फिर रीफ्रेम कर लेता हूँ। मैं सिर्फ आइडिया ले लेता हूँ, फिर मैं अपना सेंटेंस खुद रीफ्रेम कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं अपना सेंटेंस रीफ्रेम करता हूँ, वो फिर किसी भी प्लेजरिज्म चेकर में नहीं आता है ना? सो जागृति, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Take the ideas now. See, as you're progressing and as you people are getting into technical stream and technical education, also remember that the science is progressing very fast, and AI means artificial intelligence is becoming so efficient, it can find out where you have taken the idea from. So that is why language makes a difference. When you know language, you can reframe a sentence in your own word, and then you will realize that you will not face any such, feedback कि ये तो plagiarized है और ये तो यहाँ से लिया गया है सर एक पॉइंट और मुझे पूछना है आपसे। हाँ। एक जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारे गाइड हमें सजेस्ट करते थे कि आपका जो राइटअप है इसमें फ्लो नहीं आ रहा है। तो हमारा ऐसा सोचना था कि ये फ्लो तो पोएटिक चीजें होती हैं, साहित्यिक चीजों में ही हो सकता है, ये तो साइंटिफिक रिसर्च पेपर है, फ्लो कहाँ से लाएं?
तो हाँ कई बार हम उसको हमें लगता है कि ठीक है ये ऐसे ऐसे पॉइंट है और हमारा रिसर्च ये कह रहा है, हमें फ्लो डालना नहीं है, पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। किसी भी मतलब जर्नल में आपका कुछ आर्टिकल जा रहा है या फिर एक नॉर्मल मैगजीन के लिए आप लिख रहे हैं, तो एक फ्लो होना चाहिए। वो हम कैसे पकड़े, मतलब ये कैसे समझें कि वो मैं इसमें। बताता हूँ। देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन जागृति, अमेजिंग दैट यू आर ब्रिंगिंग आउट सच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सी व्हाट हैपेंस, फ्लो का मतलब, अगेन एज यू राइटली सेड, इट इज नॉट एनीथिंग पोएटिक, है ना? यू डोंट हैव टू एक्चुअली मेक योर टेक्निकल राइट अप साउंड वेरी पोएटिक, ओके, कि लोगों को वो एक गाने के रूप में उसको बना सके और अच्छा से चल जाए। लेकिन क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है? देखो, फ्लो का मतलब होता है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लॉजिकल लगना चाहिए। और इसका ना ये एक ऐसी सटल चीज़ है कि मुझे लगना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए, अंडरस्टैंड वन थिंग, राइटिंग ना इज नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज एफिशिएंसी। Writing is a lot about organizing your thoughts in the right manner, in a progressive manner. Are you getting my point? जैसे भी मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया था ना कि prioritizing and putting it in a progress, in a systematic manner. जैसे अगर मेरे को, I'm just trying to think of an example. It can be very crude also, don't mind, है ना? Like मुझे कहना है कि कल मैं अपने भाई के साथ मार्केट गया, वहाँ पे मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे और जूते काफ़ी अच्छे निकले, है ना? ये एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डिड नॉट नो दिस। ओके, सो मैं कहूँगा कि yesterday आई वेंट टू द मार्केट विथ माई ब्रदर and bought a pair of shoes, and the shoes are really good. Now, is it sounding is it sounding systematic? नॉट इन No, no. Is it conveying the idea or not? Yesterday, I went to the market with my brother yesterday and bought a pair of shoes, and the shoes are really good. It is it coming in a flow and all that? Anna? It is. Yes, sir. But if I say, I bought a pair of shoes yesterday when I went to the market with my brother, and do you understand? So, like, there is a movie called Star Wars. I don't know whether you've seen it or not. सो उसमें एक कैरेक्टर है जेडाई मास्टर, है ना, योडा। सो ही ऑलवेज पुट्स थिंग्स, वो उल्टा पुल्टा करके बोलते थे। सो जैसे अगर यही इंफॉर्मेशन को मैं कहूँगा कि yesterday with my brother I went to the market and the shoes are very good which I bought yesterday. Do you understand? वही सारी चीज़ें हैं जागृति, बट ये फ्लो में नहीं है। इट इज़ एब्रप्ट। आर यू गेटिंग इट? यस। It is grammatically correct also, but it is still abrupt. Okay, so that exactly. So believe me, uh, since you are a student, I believe, and you're maybe a research student, that's why you have interact. तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा और ओपन हो जाइए एंड सोचिए कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। यू मे आस्क क्वेश्चन कि सर आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे फ्लो नहीं आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ ए फ्लो यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, वेयर इज इट साउंडिंग लिटिल एब्रप्ट एंड जडरी। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम रादर देन रिजेक्टिंग द आइडिया यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस टू देयर गाइड कि सर थोड़ा सा मुझे अगर एक बार थोड़ा बताएं कि किस तरह से अगर मुझे करना है। एंड बिलीव मी, राइटिंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न। माय लैंग्वेज वाज गुड व्हेन आई जॉइन द एयरफोर्स, बट मेरे इतने सारे ड्राफ्ट को उठा उठा के फेंक दिया गया एंड फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, दिस इज हाउ आई शुड राइट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझे ये रखना चाहिए, फिर ये रखना चाहिए। तो मुझे सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखने की धीरे धीरे आदत पड़ी। एंड जागृति, इट टेक्स टाइम, है ना? यस, ओके ओके, थैंक यू सर। Very good. Okay. So if anybody else has a question, you're most welcome. Otherwise, I have planned 2 activities, 2 write-ups for you, which we can send to you. So shall I do that? Yes, sir. Hello. Okay. So I'll just find out how to do that. मैंने 2 एक्टिविटीज़ आपके लिए प्लान की हुई हैं, वो मैं कैसे शेयर कर सकता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी इफ आई कैन डू दैट।
सो इसमें एक आपको राइटअप है, एक मैं चार्ट दिया है आपको, आपको इस चार्ट के बारे में लिखना है ना, अपने वर्ड में, जस्ट ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल टेक्निकल फॉर यू। और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है कास्ट से रिलेटेड, जिस पे आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना है। ये दोनों लिख के, एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग व्हेन द सेशन स्टार्टेड, आप इसको एक प्लेन पेपर में बाद में लिख लीजिए, और उसके बाद उसकी पिक खींच के हमारा एक ग्रुप होगा, हम बना लेंगे या देख लेते हैं, उसमें आप भेज दीजिएगा। मैं इंडिविजुअल फीडबैक तो नहीं दे पाऊंगा, माफ़ करें, बिकॉज बहुत सारा हो जाएगा, बट मैं फिर उसमें से पॉइंट्स निकाल के बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या क्या कॉमन एरर था। ओके, सो लेट्स डू दैट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। Hey, there's a group. Okay, I'm sending this exercise. You are all on the group. Hello. Yes, sir. Okay, so I'm sending these two exercises in the group. Okay, so I'm signing off and I'm sending these two exercises in the group. Just a second. Huh? Just a second. I'm sending this exercise in the group. Okay, so we are sending this exercise, these two write-ups for you through the WhatsApp group. So now I'm signing off. You please do this, and then again you can send with your name and all. Take a clear pic of that and send it to us. Okay then. Thank you very much. Hello, are you people there? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay. Thank you very much. Then see you tomorrow in the next session. Okay. All the best. Do plan it, properly plan it, and then write. Follow the instructions which I gave you today. Okay? Thank Bye. you, sir. Thanks. I'm signing off. उसमें लिख दो मैं